Okay, students, today we are starting the second topic of our ADMES, that is indices, surds, and log from the past paper. And now the question number one is from May June 14, paper 1-2. Given that the first equation, and we have to show this. The first equation is with indices. So, अब आप देखिए complete equation हम convert कर सकते हैं in the base of 2. Here the first thing is 2 power 5x multiply by, इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर पावर y equals to 1/2 cube. So now 2 power 5x multiply by 2 power 2y, पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं आपस में, equals to 2 power -3. जब ये ऊपर आया तो पावर नेगेटिव हो गई, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी. तो 2 power 5x plus 2y equals to 2 power -3. And now the bases are same towards left and right hand side. So bases eliminate, powers will be equated. 5x plus 2y equals to -3. And this we have to prove. And this we have to prove. Now, after that, solve the equation, solve the simultaneous equation. We have to solve simultaneously. The first equation is 5x plus 2y. This one is 5x plus 2y equals to -3. And the second equation is 7 power x. 49 will be 7 square power 2y equals to 1. Now, 7 power x multiplied by 7 power 4y equals to, anything power 0 is equals to 1. So I'm writing here 7 power 0. So this one will be 7 power x plus 4y. This is same multiplication hai, so powers add ho jayenge equal to 7 power 0. And now we can say that x plus 4y equals to 0. This is equation 2. And by this, the value of x is -4y. I am replacing in equation 1. So it will be 5 times -4y plus 2y equals to -3. And this will be -20y plus 2y equals to -3. And this is -18y equals to -3. And the value of y is 3/18 is 1/6. And the value of x is -4 times 1/6, which is equals to -2/3. Therefore, the coordinate is -2/3 and 1/6. A question of 4 marks. The question is clear, hopefully. There's no confusion in this question. Yes, we can say it, the third equation, but it's not necessary to write. Kafi hai itna. Next question. Question number 2. Again, the question number 2 is about indices. What we have to do in this? What we have to do in this question number 2? Again, first we have to convert the first equation in the base of 2. So 2 power 4x multiply by 2 square power y multiply by 2 cube power x minus y equals to 1. So it will be 2 power 4x plus 2y will be here plus 3x minus 3y. With a single base of 2, तमाम powers को add करके लिख दिया is equals to 1 is 2 power 0. Anything power 0 is equals to 1. Anything power 0 is equals to 1. So now we can say that 4x plus 3x is 7x. 2y minus 3y is minus y is equal to 0. Let's say this is equation 1. And for equation 2,
we have to convert all the things in the power of 3. So it will be 3 power x plus y is equals to 3 power minus 1. जब डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेकर आएंगे तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा. So x plus y is equal to minus 1. This is equation 2. From this, if I say that the value of x is minus y minus 1, replace in equation 1. So 7 times minus y minus 1 minus y equal to 0. Minus 7y minus 7 minus y equal to 0. Minus 8y equals to 7. And the value of y is minus 7 over 8. If the value of y is minus 7 over 8, then the value of x will be, if we replace here minus 7 over 8 minus 1, then it will be 7 over 8 minus 1. And the final answer will be minus 1 over 8. So the coordinates are minus 1 over 8, comma, minus 7 over 8. These are the coordinates for question number 2. Hopefully the question is clear of 4 marks. It's not a difficult question. Next question. Next question is about the substitution. Substitute y equals to 5 power x. इस क्वेश्चन में इसने एग्जामिनर ने खुद सब्स्टिट्यूशन आपको गिवन दे दी है. अगर कहीं सब्स्टिट्यूशन गिवन ना दी जाए और सेम बेसिस की डिफरेंट चीजें आपको नजर आए तो आप सब्स्टिट्यूशन खुद से भी कर सकते हैं. इफ इट इज नॉट गिवन then you can substitute the same basis with any variable, right? तो आप लोग खुद भी इसको substitute कर सकते हैं. यहाँ पर तो इसमें given दे दिया गया. Now, what the substitution is, y equals to 5 power x. तो अब इक्वेशन में अब हम क्या करेंगे, 5 power x को अलग करेंगे. कैसे? From the given equation, I am writing 5 power 2x into 5 power 1. ब्रेक कर लिया मैंने, 5 पावर 2x प्लस 1 को ब्रेक कर लिया मैंने, और वो क्या हो गया जनाब, 5 पावर 2x इंटू 5 पावर 1 माइनस, हियर आई एम राइटिंग 5 पावर x इंटू 5 पावर 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 5 पावर x. नाउ आई एम राइटिंग हियर 5 पावर x होल स्क्वायर्ड इंटू 5 minus 5 power x into 5 plus 2 equals to 2 into 5 power x. Now, 5 power x is y. So I'm writing here y squared, and here it is 5 minus 5y plus 2 is equals to 2y. So now 5y squared minus 8y plus 2 is equal to 0. This is the quadratic equation which we have to write. And after that, in the second part, we have to solve the equation. We have to solve the equation. The equation is 5y squared. The equation is 5y squared minus 8y plus 2 is equal to 0. It's a quadratic equation. We have to solve it. So now it's a question of 4 marks. So we have to show all the things by middle term breaking method or by the quadratic formula. So now, this will be, yes, not minus 8y. This will be minus 7y. Sorry. Minus 7y. This is minus 7y because minus 5 minus 2 is minus 7. So now, this is minus 7y. Now we have to break the middle term. Now we have to break the middle term. Now how to break the middle term? We 5y square minus, this will be 5y minus 2y plus 2 equals to 0. Minus 5 minus 2 is minus 7 and 5 2s are 10. Yes. It is the middle term breaking, 5y common. So it will be y minus 1, minus 2 common. It will be y minus 1 equal to 0. Y minus 1 common. So it will be 5y minus 2.
equal to 0. So what is the value of y? The value of y is 1. And here 5y minus 2 is equal to 0. So what is the value of y? The value of y is 2 over 5. Hence, solve the equation means we have to calculate the value of x. We have to calculate the value of x because in this equation, which we have to solve, the unknown variable is x. So we have to calculate the value of x. And what we substitute in the first part, the substitution of the first part is y equals to 5 power x. So at the place of y, we are allowed to write 5 power x. So equals to 1, and second, 5 power x equals to 2 over 5. Now, अब आप देखिए, अगर ये ऐसा होता 5 power x is equals to 25, तो हम आराम से इसको कर लेते 5 power x is equals to 5 power 2 and the value of x is 2. लेकिन ये ऐसा नहीं है. अब हमें क्या करना होगा? What we have to do? बेसिस सेम नहीं हो सकती राइट और लेफ्ट पर, और जब राइट और लेफ्ट पर बेसिस सेम ना हो सके, यहां पर एक और मेथड से बेसिस सेम हो सकती हैं. 5 पावर x is equals to 5 पावर 0. So the value of x is 0. But here in the second one, किसी भी तरीके से ये 5 2 upon 5 5 में कन्वर्ट नहीं हो सकता. तो जब ऐसी बात हो जाए, then we have to use log, taking log on both the side. So ln 5 power x is equal to ln 2 over 5. Now guys, take out your calculators. According to the property of log, power पहले आ जाएगी. So it will be x ln 5 is equal to ln 2 over 5. And after that, the value of x is ln 2 over 5 divided by ln 5. So can you please tell me the result? What is the answer from your calculators? Yes, write me the answer. The answer is minus 0.569. Minus 0.569. These are the two results. These are the two results. Now, question number 4. Question number 4 is a pure question of log. We have to solve this question by the help of log. Calculators must be in front of you. So now, what we have to do, बच्चों, जब log का इस टाइप का क्वेश्चन आए कि एक टर्म विदाउट लॉग हो, तो आपने क्या करना है? उस टर्म को अलग कर देना है, तमाम लॉग्स को एक साथ कर देना है. ना, अब आप देखिए, फर्स्ट तो मैं ये लिख रहा हूं, क्या चीज? 1 प्लस लॉग से पहले जो एलिमेंट होता है वो पावर में जा सकता है. 1 प्लस log 5 x स्क्वायर equals to log 5 18x minus 9. So now I'm writing here log 5 18x minus 9. log 5x स्क्वायर को राइट साइड पर लेके जा रहे हैं, तो माइनस log 5 x स्क्वायर इक्वल्स टू 1. 1 लेफ्ट साइड पर था, मैंने राइट साइड पर लिख दिया, वो कोई इशू नहीं. नाउ आफ्टर दैट, अगर सेम बेसिस वाले लॉग सब्ट्रैक्ट हो रहे हो तो उनको हम डिवीजन के साथ लिख सकते हैं. तो log 5 18x minus 9 divided by x squared equals to 1. Now after that we have to use a property of log, and the property of log is if we have log a b is equal to c, then we are allowed to write b is equals to a power c. log की बेस राइट साइड वाले एलिमेंट की बेस बन जाएगी. तो जनाब, अब हम यहां पर भी यही वर्किंग कर रहे हैं, 5 को 1 की बेस बनाएंगे. तो इट विल बी 18x minus 9 over x squared equals to 5 power 1. Now cross multiplication, 18x minus 9 equal to 5x squared, and now 5x squared minus 18x plus 9 equal to 0. Now we have to break the middle term again. So it will be 5x squared minus 20x
we have to break the middle term. अब middle term जरा break करते हैं. 5 9s are 45. We need product as 45. Product as 45. X square and जब इसको ब्रेक किया जाएगा तो प्लस माइनस करके हमारे पास क्या आना चाहिए? 18 आना चाहिए. So now, so it will be 15x minus 3x plus 9 is equal to 0. So the product is 45x squared, and if we add or subtract the both term, then the result is minus 18x. Take 5x common. So it will be x minus 3, minus 3 common, x minus 3. अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम हो जाए तो इट मीन्स हमारी मिडिल टर्म ब्रेक सही हुई है. So now x minus 3 in the bracket 5x minus 3 equal to 0. So after that, what are the two values of x? The two values of x are, the first value of x is 3 and the second value of x is 3 over 5. एक और चीज ध्यान में रखिएगा बच्चों, जब आपके पास वैल्यूज आ जाएं, वैल्यू आ गई 3 and 3/5, जब आपके पास आंसर में वैल्यू आ जाए तो एक नजर आप क्वेश्चन पे जरूर डालेंगे. और क्वेश्चन में विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर सिर्फ ऐसे ही आप x की वैल्यूज रखकर चेक करेंगे. x अगर मैं क्वेश्चन में 3 रखता हूं तो कहीं पर भी नेगेटिव जनरेट नहीं होगा, कहीं पर भी नेगेटिव जनरेट नहीं होगा. अगर x को मैंने 3 रखा तो ये भी पॉजिटिव रहेगा और ये भी पॉजिटिव रहेगा. तो जनाब यस, दिस x इक्वल्स टू 3 इज एक्सेप्टेबल. और अब मैं रख रहा हूं 3/5. तो जनाब अगर मैं 3/5 रखता हूं, आप लोगों ने लिखकर चेक नहीं करना, सिर्फ ऐसे ही रखकर चेक कर लेना है. ना कैलकुलेटर यूज करेंगे ना लिखेंगे, लेकिन मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. log 5. अब अगर 18x minus 9, 18x minus 9, x की जगह पर मैं 3/5 रख रहा हूं. So it will be 18 multiplied by 3/5. 18 multiplied by 3/5 minus 9. रिजल्ट आ रहा है बच्चों 9/5. रिजल्ट आ रहा है बच्चों 9/5. Result is 9/5. So it means from the both values we are getting the positive value, right? We are getting the positive value. तो जब दोनों वैल्यूज से ही पॉजिटिव आ रहा है तो दोनों को ही एक्सेप्ट कर लिया जाएगा. These two values are the results. अगर फॉर इंस्टेंस ये नेगेटिव प्रोड्यूस हो जाता तो हम इसको रिजेक्ट कर देते. जिस वैल्यू पर नेगेटिव प्रोड्यूस होगा उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा. एंड वन मोर थिंग, जब ये वैल्यूज आप आंसर जब आ जाएगा तो उसको क्वेश्चन में आप रख देंगे, उसको क्वेश्चन में रख दिया जाएगा. क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट स्टेप में नहीं रखेंगे आप. यू ऑलवेज हैव टू सब्स्टिट्यूट इन द ओरिजिनल क्वेश्चन. ओरिजिनल क्वेश्चन के बाद एक भी स्टेप आपने किया और उसमें वैल्यूज रख दी तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा. आपने ओरिजिनल क्वेश्चन में वैल्यूज रखकर चेक करना है कि कहीं लॉग नेगेटिव तो जनरेट नहीं हो रहा, और अगर लॉग नेगेटिव जनरेट हो जाए तो वहां पर आपने उस वैल्यू को रिजेक्ट कर देना है. होपफुली द कॉन्सेप्ट एंड द क्वेश्चन इज क्लियर. नाउ व्हाट वी हैव इन दिस क्वेश्चन नंबर 5, solve the equation. Again, we have to solve the equation. First, we have to convert the whole equation in the same base. 16 को हम लिख सकते हैं 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 2 power 4. 16 को हम लिख सकते हैं 2 power 4. 2 power 4 whole power 3x minus 1. And for 8, 2 cube whole power x plus 2. So it will be 2 power 4 3s are 12x. Minus 4 1s are 4 equals to 2 power 3x plus 6. Same basis, so we are allowed to write 12x minus 4 equals to 3x plus 6. 12x minus 3x is 9x and 6 plus 4 is 10. So the value of x is 10 over 9. Hopefully a very simple part of question number 5 clear. Now, the next one, given that
the left hand side is equal to the right hand side. Find the value of each of the constant P and Q. अब जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, हमें लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड जो भी अननोन होगा उसको कैलकुलेट करना है, लेफ्ट पर हो चाहे राइट पर हो। कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले हम इंडाइसिस की हेल्प से पावर्स को ब्रेक करेंगे तमाम वैल्यूज के ऊपर। तो न्यूमिनेटर में होल पावर 3 है, 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे ए की पावर 1/3 और बी की पावर -1/2 को, तो विल गेट ए पावर 3/3 इज 1 मल्टीप्लाई बाय बी पावर -3/2 डिवाइडेड बाय क्या लिखा हुआ है, a power -2/3 and b power 1/2. I'm just working on the left hand side. I'm just working on the left hand side, converting the left hand side into right hand side. So now this will be a power 1. अब आप देखें डिनोमिनेटर में सेम बेस मिल रही है a with -2/3. जब ये ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, +2/3. Here it is b -3/2. डिनोमिनेटर में सेम b, जब ये ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, -1/2. नाउ द वैल्यू ऑफ a इज, एलसीएम लिया गया 3 से, सो इट विल बी 5/3. द पावर ऑफ b जब एलसीएम लिया गया 2 से, तो इट विल बी -4/2. फाइनली इट विल बी a पावर 5/3 and b power -2, and this is same as the right hand side, and the right hand side is a power p. The right hand side is a power p and b power q. So can I say that p is 5/3 and q is -2? These are the final results for part B. Hopefully the question is clear. Now, we do not have to use calculator in this equation. And now, what we have, find the positive value of x. It's a quadratic equation. It's a quadratic equation. And we have to find the value of x in the form of this. In the form of this. चेक करते हैं जनाब किस तरीके से ये कैलकुलेट किया जाएगा। अब आप देखिए मिडिल टर्म ब्रेक वगैरह तो इसमें हो नहीं सकता, तो वी हैव टू यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। एंड व्हाट इज दैट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? आई एम राइटिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला फर्स्ट। x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर्ड -4ac अपॉन 2a. So now what is b? The value of this is a, this is b, and this is c. The value of b is 2 minus under root 5 plus minus under root b squared 2 minus under root 5 whole squared minus 4. The value of a is 4 plus under root 5 4ac, and c is -1 divided by 2a. What is a? 4 plus under root 5. Now, after that, माइनस से मल्टीप्लाई करवा दीजिए ब्रैकेट को, -2 प्लस अंडर रूट 5 प्लस माइनस. नाउ वी हैव टू वर्क इन द अंडर रूट. 2 माइनस अंडर रूट 5 होल स्क्वायर का फॉर्मूला एक्सपेंड होगा. अगर मैं इसको अलग से एक्सपेंड कर दूं, 2 माइनस अंडर रूट 5 होल स्क्वायर विल बी a स्क्वायर -2ab plus b squared. So it will be 4 minus 4 under root 5 plus 5. So it will be 9 minus 4 under root 5. So now I'm writing 9 minus 4 under root 5 at the place of 2 minus under root 5 whole square minus 4 से मल्टीप्लाई करवा, माइनस माइनस प्लस 4 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए 16 प्लस 4 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2 से मल्टीप्लाई. अभी रुक जाइए, अभी 2 से मल्टीप्लाई नहीं करवा रहे, हो सकता है ऊपर कुछ कॉमन आ जाए तो 2 हमारा कैंसिल हो जाए. डिनोमिनेटर को कोशिश करते हैं मल्टीप्लिकेशन पर ना लेकर आए. डिनोमिनेटर में कॉमन जो रहता है वो मोस्टली कैंसिलेशन पर आ जाता है.
So now, -2 plus under root 5 plus minus cancel out. 16 plus 9 is 25. And under root of 25 is 5. Divided by 2, 4 plus under root 5. Now, after that, I am allowed to write as it is plus and minus. So it will be -2 plus under root 5 plus 5 divided by 2, 4 plus under root 5. And the second one is -2 minus plus under root 5 minus 5 divided by 2, 4 plus under root 5. अब देखा न्यूमरेटर में कैंसिलेशन तो नहीं हो रही 2 से, तो हम 5 minus 2 is 3 plus under root 5 और डिनोमिनेटर को भी हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं. 4 2s are 8 plus 2 under root 5. And now here it is -2 minus 5 is -7 plus under root 5. डिनोमिनेटर को यहां पर भी मल्टीप्लाई करवा देते हैं 8 plus under root 2 under root 5. 8 plus 2 under root 5. अब सुनिएगा, हमें इस फॉर्म में आंसर नहीं देना, हमें किस फॉर्म में आंसर देना है कि डिनोमिनेटर में अंडर रूट ना हो. अगर डिनोमिनेटर से अंडर रूट को एलिमिनेट करना होता है तो हमें क्या करना होता है, रैशनलाइज. सो देयरफॉर द फर्स्ट इज 3 plus under root 5 divided by 8 plus 2 under root 5. हाउ टू रैशनलाइज? डिनोमिनेटर का मिडल साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दें. डिनोमिनेटर का मिडल साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दिया जाएगा. सो नाउ इट विल बी, मल्टीप्लाई करते हैं, 3 8s are 24 minus 3 2s are 6 under root 5 plus under root 5 into 8 is 8 under root 5 and under root 5 is 5. 5 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 माइनस के साथ डिवाइडेड बाय, अब देखिए नीचे a plus b into a minus b. So we have to use the formula of a square minus b squared. So it will be 8 squared minus 2 under root 5 squared. So this will be 24 minus 10 is 14 minus 6 under root 5 and 8 under root 5. So it will be plus 2 under root 5. And in the denominator, it will be 64 minus 2 का स्क्वायर हुआ 4, under root 5 का स्क्वायर हुआ 5, तो 4 5s are 20. So it will be 14 plus 2 under root 5 divided by 64 minus 20 is 44. ऊपर से 2 कॉमन, तो क्या बचा 7 plus under root 5. 44 का जब 2 ने कैंसिल किया तो क्या बचा 22. This is the first answer. This is the first answer. And now the second answer. -7 plus under root 5 divided by 8 plus 2 under root 5. Again, we have to rationalize this. Middle term, sorry, middle sign change करवा के multiply and divide किया जाएगा. Denominator का middle sign change करें, multiply and divide कर दें. So now, what we have to do? Again, the multiplication 7 8. Again, the multiplication 7 8s are minus 56. 7 2s are 14 with plus sign under root 5. And now under root 5 into 8 is plus 8 under root 5. And under root 5 into under root 5 is 5. And 5 2s are 10 with minus sign. Divided by, again, a minus b into a plus b. So it will be 8 squared plus, sorry, minus 2 under root 5 whole square. So here it is, 56 plus 10 is 66 and 14 plus 8 is 22. 22 under root 5 divided by, as we done previously, it is 44. So now, from the numerator, if I take common 22, 22 अगर कॉमन लिया तो it will be -11 plus under root 5 divided by, और 44 अगर
22 से डिवाइड होगा तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 2. दिस इज द सेकेंड आंसर. These we have to calculate in the given form of question. A question of 6 marks. We have to solve the quadratic equation. Okay, students, now question number 8 is question of log. What we have to do, we have again a substitution is given. Log 3x को हमने क्या लिखना है, y लिखना है. So now, here, first I have to arrange all the things. This is log 3x whole squared plus power 5 को पहले लेकर आऊंगा. So it will be 5 log 3x minus log 3, 9 को मैं लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर equal to 0. So now it will be, अब रिप्लेस कर रहा हूं मैं log 3x को y से, so it will be 3y squared plus 5y minus. अब आप देखिए, according to the property of log, log a power b, if the both values are same, log की बेस और जो log के साथ में लिखा हुआ है a, इसको आर्ग्यूमेंट बोलते हैं. If the base and argument both are same, then power will be the answer. So this is 2 equal to 0. Now we have to break the middle term here. So it will be 3y squared plus 6y minus y minus 2 equal to 0. 3y common, y plus 2 minus 1 common, y plus 2 equal to 0. So y plus 2 common, 3y minus 1 equal to 0. So according to this, the first value of y is minus 2 and the second value of y is 1 over 3. And what is y? What is y? Y is basically log 3x. Here it is log 3x equals to minus 2. And here it is log 3x equals to 1 over 3. So according to the previous property जो अभी हमने last question में की solve, x को लिखा जा सकता है 3 power minus 2. यहाँ x को लिखा जा सकता है 3 power 1 over 3. So according to this, the answer is 1 over 9. And according to this, the answer is cube root of 3. Cube root of 3. This is the final result. Hopefully, the question is clear. Question number 8. Now, the next one is, again, simplify. We have to simplify this. You just have to multiply and all the things. And after, in the last step, you have to take, you have to rationalize. Inshallah, you will do this question easily. And in the B part, the diagram shows the triangle. This given that cos ABC, cos ABC is minus half. Find the length of AC. We have to calculate the length of AC. By the help of cos rule, you guys are able to calculate the length of AC. It's a simple question. I'm not doing this. I'm doing this. Question number 10, the question of log. Write log 2p, log 3, 2 plus log 3q as a single log to base 3. हमें क्या करना है? base 3 में कन्वर्ट कर देना है तमाम logs को. base 3 में कन्वर्ट कर देना है तमाम logs को. कैसे होगा जरा चेक करते हैं. पहले लिखा हुआ है log 2p. सेकेंड वाला log तो log base 3 में कन्वर्टेड है. ये भी log base 3 में कन्वर्टेड है. लेकिन ये log 2p log 3 की बेस में कन्वर्टेड नहीं है. अब कैसे होगा जरा चेक करते हैं. आई एम राइटिंग इट log p divided by log 2. According to the rule of log, if we have log ab, then we are allowed to write it like log b divided by log a. बेस हम अपनी तरफ से कोई भी लिख सकते हैं. This is called change of base log. So I am just writing 3 here. I am changing the base
of the first log 2p as 3 multiply by log 3 2 plus log 3 q. अब आइए जनाब क्या वर्किंग हो सकती है? ये तो हमने कन्वर्ट कर दिया लॉग बेस 3 में सबको. नेक्स्ट स्टेप विल बी, अब आप देखिए हियर इट इज log 2 3 एंड हियर इट इज log 3 2 and here it is log 3 2. The both are cancel out. So I'm writing this log 3p plus log 3q, or according to the property of log, if we have log a plus log b with the same base, then we are allowed to write it like log c ab. Multiplication के साथ लिखा जा सकता है. So I'm just converting this by the help of property log 3 pq. This is the final answer. Hopefully it is clear. There is no confusion in question number 10. Next one, part B. Given that this, find the possible values of a. अब आप देखिए, मैंने आपसे कहा था कि अगर सेम चीजें आपको नजर आने शुरू हो जाएं एक क्वेश्चन में, तो अच्छा है उसको सब्स्टिट्यूशन के साथ करें. तो यहां पर मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, लेट log a5 is equals to, let's say I'm writing it t. So now here it is t squared minus 4t plus 3 equal to 0. Now we have to break the middle term. So it will be t squared minus 3t minus t plus 3 equal to 0. T is here, so t minus 3. Minus 1 is here, so t minus 3 equal to 0. T minus 3 common, so it will be t minus 1 equal to 0. So what is the value of first value of t? It is 3. And the second value of t is 1. And what is t? The t is log 5a equals to 3. Log 5a equals to 1. So according to the property of log, we can say that 5 is equals to a power 3. And here we can say that 5 is equals to a power 1. यहां से तो आ गया a is equals to 5, और यहां से क्या आ गया? a is equals to cube root of 5. These are the possible values of a for part B. Now students, question number 12. First, we have to calculate, solve LGX equals to 3. LGX means log base 10. So we are allowed to write it like x equals to 10 power 3 and the value of x is 1000. A simple part of 1 mark. Second, we have to write in a single log. So here it is log LGA. LG means log base 10 minus LG B squared. इसको मैं ऊपर लेकर चला गया अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, प्लस 3. मैं यहां पर लिख रहा हूं जनाब LG10. What is LG10? Basically LG10 is log base 10 and 10 power 1. So the result is 1. So it means same base और आर्ग्यूमेंट के साथ हम कोई भी log कहीं पर भी लिख सकते हैं, because that is equals to 1 only. So now अब आइए, it is LGA minus LGB squared plus LG 10 cube and 10 cube is 1000. अब आ जाइए, सारे लॉग सेम हो गए, जो प्लस हो रहे हैं उनको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, तो 1000a, और जो सब माइनस हो रहा है उसको डिवीजन के साथ लिख दीजिए ओवर b squared. This is the answer for this part. Now B1, in this we have to solve the equation. It's a simple question. I'm not doing this. Okay. आगे इसको hence के साथ लेकर गए हैं तो ठीक है. I'm solving this too. First take LCM. LCM of x.
So it will be x squared minus 5x plus 6 equal to 0. So x squared minus 5x plus 6 equal to 0. X cross multiply होके 0 हो गया. By middle term breaking, x squared minus 6x, sorry, minus 3x minus 2x plus 6 equal to 0. X common, x minus 3 minus 2 common, x minus 3 equal to 0. X minus 3 common, x minus 2 equal to 0. The two values of x are here, 3 and 2. And after that, we have to solve the second equation. Log 4a minus 5, 6 log. Okay. I'm writing here. Log 4a minus 5 plus 6. अब देखिएगा जरा, लॉग की एक और प्रॉपर्टी है हमारे पास. अगर लिखा हुआ है लॉग ए बी, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन लॉग बी ए. आर्ग्यूमेंट बेस पर चला जाएगा, बेस आर्ग्यूमेंट पर आ जाएगा. तो यहां पर मैं 6 लॉग ए 4 को लिख रहा हूं, 6 अपॉन लॉग 4a इक्वल टू 0. और अब मैं कह रहा हूं लेट log 4a इज इक्वल टू x. तो ये क्या हो गया, x minus 5 plus 6 over x equal to 0. And it is same as the equation of part 1. So the answer of this equation is x equals to 3 and x equals to 2. और x क्या है, x is log 4a equals to 3 and log 4a equals to 2. So according to the property of log, a is 4 power 3. According to the property of log, a is 4 power 2. Now, here it will be, the value of a is 64 and here the value of a is 16. These are the two values of a. Hopefully, again, there's no confusion in this question number 12. Again, the question of indices. Chale, I'm solving this question of indices, question number 13, part A. The whole question is equal to this. It means we have to convert all the things in the base of 2 and 3. So now, here it will be 6 power p. Can I say that 2 multiplied by 3? 2 3s are 6 power p. Yes, it is. 8 को लिखा जा सकता है 2 का क्यूब पावर p प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर क्यूब डिवाइडेड बाय 9 को लिखा जा सकता है 3 स्क्वायर पावर 2 क्यूब माइनस 3. सो हियर इट इज. पावर्स को आप कर रहे हैं जनाब ब्रेक. पावर्स को कर रहे हैं आप ब्रेक. तो 2 पावर p multiply by 3 power p multiply by 2 power 3p multiply by 2 power 3 2s are 6 multiply by 3 power q divided by 3 power 2 2s are 4q minus multiply by 3 power 3 2s are 6 with minus sign. ये हमने नीचे वाली पावर्स को भी ब्रेक करके लिख दिया प्रोडक्ट के साथ. ना अब आइए तमाम 2 को एक साथ लिख रहा हूं मैं. 2 पावर p 2 पावर 3p एंड 2 पावर 6. तमाम 3 को एक साथ लिख रहा हूं मैं. 3 पावर p 3 पावर q और ये जब पावर 4q ऊपर जाएगा तो माइनस 4q और माइनस 6 जब ऊपर जाएगा तो प्लस 6. So it will be 2 power 4p plus 6 multiplied by 3 power p minus 3q plus 6.
आ गए जनाब हम इस फॉर्म में, जो फॉर्म हमें चाहिए थी। अब इन्होंने क्या कहा कि जो 2 की पावर है उसको हम लिख सकते हैं 7 के इक्वल। तो जनाब 4p plus 6 is equal to 7 and 4p is equals to 1 and the value of p is 1 upon 4. और क्या कह रहे हैं जनाब, 3 की पावर को हम लिख सकते हैं 4. So p minus 3q plus 6 is equals to 4. So now we have to calculate the value of q. 3q को राइट साइड पर ले जाइए, 4 को लेफ्ट साइड पर ले आइए. So p plus 2. 6 minus 4 is 2. So 3q is equals to what is p? P is 1 upon 4 plus 2. And the value of q is, by taking LCM of 4, it will be 4 to the 8, 8 plus 1, 9 upon 4. 3 3s are 9. So the value of q is 3 upon 4. This is the value of q. P or q की values हमने calculate कर ली by the given conditions. Hopefully the question is clear. Now, in the B part, again, the substitution is given here. U is equals to 1 over x power 1 over 3. So I'm writing it like 4x power 1 over 3 plus x power 1 over 3 is squared plus 3 equals to 0. At the place of x power 1 over 3, I am writing u plus u squared plus 3 is equal to 0. So u squared plus 4u plus 3 is equal to 0. Now, u squared plus 3u plus u plus 3 is equal to 0 by middle term breaking. U common u plus 3 plus 1 common u plus 3 is equal to 0. U plus 3 common, u plus 1 is remaining, equal to 0. So according to this, the value of u is minus 3. The value of u is minus 1. And what is u? X power 1 over 3 equals to minus 3. X power 1 over 3 equals to minus 1. So here it is x power minus 3 का cube. Power उधर जाके reciprocate हो जाएगी. So the value of x is minus 27 and minus 1. These are the two values. Hopefully the question is clear. So in today's class, we have done first 13 questions of paper 1, indices and log chapter.